Beta ji, today we will learn how to factorize a quadratic equation. What is a quadratic equation? Quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 नहीं होना चाहिए. कोएफिशिएंट पता है बेटा क्या होता है? जो वेरिएबल जी, जो बेटा जी, जो वेरिएबल के साथ लगता है, बिल्कुल सही है, वेरिएबल के साथ होता है। बिल्कुल ठीक है. अब ये देखें कि फैक्टराइज करने का तरीकाकार क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और सॉल्व करने का क्या तरीकाकार है उसको. This one is a quadratic equation. First of all, we will arrange this equation. First of all, we will write the term containing x square, then the term with x, and then the term with without x. सबसे पहले पावर 2 आएगी, फिर पावर x की 1 आएगी और फिर x की पावर 0 आएगी. इन द लास्ट टर्म द पावर ऑफ x इज 0. अब हमने फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है. नाउ वी विल मल्टीप्लाई द a and c. After multiplying a and c, this one is known as the product. 1 into 1 is equal to 1. The coefficient of x square is 1 and the last term is also 1. So the product is 1. Now we will let the middle term, coefficient of middle term as sum, that is minus 2. Now we want to factorize the product. 1 को हम factorize करना चाहते हैं. The possible factors of 1 are 1 into 1. यही factors बनते हैं. इनको किसी तरीके से ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से क्या माइनस 2 बन सकता है? माइनस 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 1x माइनस 1x. Yes. We will write down minus 1 and minus 1. When we will multiply this minus 1 with minus 1, we will get the product 1. And when we will add minus 1 and minus 1, we will get the sum minus 2. Now we will break the middle term minus 2x and write minus 2x as minus 1x and minus 1x. There is no need to write 1, so minus x plus 1. We have broken the middle term minus 1 minus 1. Now you can see that there are 4 terms. If there are 4 terms, we will make pairs. From the first 2 pairs, we will take common x and in the bracket there will be x minus 1. And from the second pair, we will, what should be taken as common? माइनस 1. Minus 1. So that the expression inside the bracket is also minus 1 minus 1. If the expression inside the brackets is same, that is x minus 1, then you are at the right path. Now we will take common x minus 1. X minus 1 is equal to 0. Now we have factorized this quadratic expression and the two factors are x minus 1 and x minus 1 and the product of the two factors is equal to 0.
Now we will use the zero product rule. Zero product rule is if the product of two quantities or two or more quantities is equal to zero, then one quantity must be equal to zero. Either A is equal to zero or B is equal to zero. Then we can get the product equal to zero. अगर दोनों में से एक क्वांटिटी जीरो होगी तो फिर ही उनका प्रोडक्ट जीरो आएगा. Now we have two factors and the product of two factors is equal to zero. So we will use the zero product rule and put both the factors is equal to zero to get the value of x. X is equal to 1, x is equal to 1. X is equal to 1, x is equal to 1 are the solutions of this x square minus 2x plus 1 is equal to 0. अब सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी होती है, सॉल्यूशन का ये करेक्टरिस्टिक्स होता है कि अगर हम इसको इक्वेशन में दोबारा पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है. इफ यू विल पुट 1 x is equal to 1 into the equation 1 square minus 2 into 1 plus 1, 0 is equal to 0. So the solution is correct. The solution should satisfy the original equation. Now question number 2. 7a plus a square minus 18 is equal to 0. First of all, we will arrange this equation. We will write down the coefficient containing a square at the first place, then the term containing a at the second place, and the term without a at the third place. Now we will multiply the coefficient of first term with the last term. So the product is minus 18 and the middle term should be the sum of the two numbers, that is 7. The coefficient of middle term is 7. Now we will factorize the product 18. We will split 18 into two pairs, into two factors, such that the sum is 7. 1 into 18 is the one possibility, 2 into 9 is the second possibility, 3 into 6, 2 into 9. Can we make 7 from 2 or 2 and 9? Yes. How? Plus 9a minus 2a. Yes. The two numbers are minus 2 and plus 9. Now we will break the middle term 7a and write the middle term as 9a minus 2a. Now we have four terms. We will consider the two pairs, and a is common in the first pair, a plus 9 in the brackets, minus 2 is common in the second pair, and in the brackets there is a plus 9. If we will take 2 as common from the second brackets, तो क्या होगा कि ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म नहीं आएगी. देखिए कैसे, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे सेकंड ब्रैकेट में से तो अंदर आएगा माइनस ए माइनस 9, ए प्लस 9 नहीं आएगा. जब क्या होना चाहिए कि इन बोथ द ब्रैकेट्स द एक्सप्रेशन शुड बी सेम. ये निशानी होती है आपकी फैक्टराइजेशन के ठीक होने की, मिडिल टर्म सही होने की. अब a plus 9 is common in both, so a plus 9 into a minus 2, we will use zero product rule and we will put both the factors equal to 0. And the two answers are a minus 9
a is equal to minus 9 and a is equal to 2 are the solutions of this equation. Now I will solve question number 7. 12 minus a square is equal to 0. First of all, we will arrange the quadratic equation minus a square minus a plus 12. If we will we can make the first term positive by multiplying throughout with negative. अगर हम पहली टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे we will get a square. सेकंड में a, third में -12 is equal to 0. Now we will multiply the coefficient of first term with the last term. 1 into -12 is equal to -12. So product is equal to -12 and sum should be equal to the middle term, that is 1. The coefficient of middle term, that is 1. Now we will factorize 12. We will break 12 into pairs, that is 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. Minus. So 3 into, we can multiply 3 and 4 to get 12 and we can subtract 3 and 4 to get 1. So positive 1. We need positive 1. So -3 and positive 4 are the pair for the middle term breaking. So a square plus 4a minus 3a minus 12 is equal to 0. We will make pairs in case of 4 terms available. From the first pair, a is common. From the second pair, -3 is common. When we will take minus common from the -3a and 12, it will change the signs of both the terms. And since both the terms -3a and -12 are negative, it they will become positive when we will take minus as a common. Now a plus 4 is common and a plus 3 is the other factor. Using zero product rule, we will put both the factors equal to 0 and we will get the value of a, two values of a. Now I will attempt question number 10. सर जी बेटे, सर इसका आंसर माइनस से आना है तो वो -4 + 3 होगा. क्या बेटे जी? सर जैसे उन्होंने कहा है वो माइनस से आएगा, अगर आपने +4 माइनस किया तो वो +a आएगा. आपने ऊपर एक गलती की. कहाँ पर बेटे जी? आपने सर a का साइन बदल दिया. a इधर माइनस है ओरिजिनल और यहाँ पे आपने पॉजिटिव लिख लिया. यहाँ पर जी सर, इन द थर्ड स्टेप. बेटे जी मैंने बताया था कि हम ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर सकते हैं. उसके लिए हम सारी टर्म्स को थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे. मैंने बताया था कि व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म विद द नेगेटिव, इट विल चेंज द साइन ऑफ द फर्स्ट टर्म. पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा वाला नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तीसरा वाला पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा. मेरा ख्याल आपने उसको आपको पता नहीं चला उस वक्त. फिर बताऊं? नहीं सर. बात यह है कि इफ यू विल मेक द कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर पॉजिटिव, इट विल बी easy for us to factorize. 12a square minus 16a. दोबारा बताऊं बेटा ऊपर वाली चीज? नहीं सर. अच्छा जी, ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास. अब we will multiply the coefficient of first term with the last term. 12 into -35 कितना बन गया? -242.
-420 फोर नहीं बन रहा? ट्वेंटी -420. Now we will make pairs of -420, 1 into 420, 2 into 210, 3 into 140, 4 into 30, 5 into 4 into 30 नहीं होगा, 130, 5 into 84, 6 into 70, 8 into 8 पे नहीं जाता ये, 7 into 60, 8 पे नहीं जाता, 9 पे। जी बेटा पेयर्स बनाएं, 420 को 9 से डिवाइड करें जल्दी से। 9 पे नहीं जाता। 10 इंटू 42, 11 पे भी नहीं जाता, 12 पे जाता है, 40 नहीं सर। 13 पे। 12 पे जाता है। जी 12 पे क्या बनता है? 12 पे, एक मिनट सर, 35। अच्छा जी 13 पे नहीं जाता, 13 पे जाता है देखें। नहीं सर। अच्छा 14 पे, 1430। 30 पे जाता है। अब यही पेयर है बेटा, इफ वी विल सब्ट्रैक्ट दीज टू वी विल गेट 16. So the possible pairs are -30 and +14. 12a square minus 30a plus 14a minus 35 is equal to 0. What's common in 12 and 30? जी बेटे जी, 6, 2a minus 5, 7 into 2a minus 5 is equal to 0. 2a minus 5, 6a plus 7 is equal to 0. We will use the zero product rule and we will put both the factors equal to 0 to get the value of a. A is 2, a is equal to 5, 6a is equal to -7, a is equal to 5 over 2, a is equal to -7 over 6. This one is the middle term breaking. This one is the solution of quadratic equation with the middle term breaking. ये बेटा काम है, अब ये आपने एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है।